मेरे already subscribers हैं कि what does this means and this means. So yes, I am back with my cooking vlog, and who are watching me for the first time, so yes, welcome to my channel. I hope you guys are doing well. So guys, like no, we are actually taking a break of outside, like since you have seen a lot of vlogs that we are doing food reviews, we are traveling, we are like exploring places, but we have taken like a little bit of precaution for few days so that you know what is happening globally, coronavirus. Yes, so we will be taking a little bit of break to protect ourselves, to save ourselves, and yes, and you have to do same with yourself as well. Use hand sanitizer, keep clean the surroundings, don't go to public gatherings much, and avoid direct contact with people who have like cough and cold. Try wearing this mask. If not, then keep it clean. Use hand sanitizer, wash your hands like in regular basis, and mask पहनने से कोई शर्म नहीं है guys. पता नहीं, मुझे नहीं पता. A lot of people, they feel ashamed of wearing mask. तो please इससे कोई नुकसान नहीं है, शर्म महसूस मत करिए. Just be safe, make your family safe. अपनी family में ये चीज़ spread करिए कि this is now a basic necessity. We have to wash our hands, we have to use hand sanitizer or some good dermatologist tested wipes, or probably a mask whenever we are stepping out of our house. So stay safe, stay nice, and yeah, we'll be back with our vlogs in few days. We just took few days break so that I'll show you some of my cooking, and I'll cook some nice food and share it with you. So okay, let's come back to the vlog. So the vlog is all about cooking, which is very easy, few steps, few ingredients, and super easy step-by-step method for beginners. So it's gonna be Atta ke biscuit. Yes guys, it's gonna be whole wheat biscuits, healthy, tasty, and बचपन की बहुत यादें जुड़ी हैं इस बिस्किट से. And personally I was craving for it, and चाय के साथ ना बिस्किट की it makes my day. चाय हो और अच्छे बिस्किट हो तो मज़ा ही आ जाता है. And honestly speaking, मेरे biscuits खत्म हो गए थे, and what I thought of making atta biscuits, because I just loved them from childhood. And then suddenly it clicked to my mind, if I'm making something nice, such a easy recipe, quick one, why not share it with you guys? So yes, here I am back with the cooking vlog, and soon I'll be uploading any travel vlog or maybe some food reviews, anything special from outside. But yes guys, it's gonna be cooking vlog today, and hope you enjoy it. If you enjoyed watching this vlog, hit the like button and subscribe to my channel, hit the bell icon below, and comment below if you have any good recipes. If you want to know something about cooking, I'm not an expert. I myself learned it from my mom, from watching a lot of YouTube channels. But yes, with time, with practice makes a man perfect. So yes, this woman is getting perfect time by time, day by day, and sharing whatever I'm learning day by day. So let's go with the video and rock and roll with my recipe. So guys, here are the ingredients. We'll be needing whole wheat flour, that is atta, desi ghee, some fresh milk, powdered sugar, and baking powder. So let's go with the recipe with some basic ingredients. So it's gonna be super quick and super easy. So let's find out the whole recipe. Then 1 cup powdered sugar, then we will be whisking it until you get a fluffy paste. So you can use a whisker, or if you have a hand blender, anything will do. So just
desired consistency, like it should turn white and it should be like properly mixed. Then हम add करेंगे whole wheat आटा. So whole wheat flour, which is 1.5 cup. So measure it before and then you have to just mix it. Mix it nicely. You can even use your hands for this. You can even use your hands. So you have to mix it nicely. Thoroughly you have to mix. Then we will be adding 1.5 teaspoon of baking powder. So 1.5 spoon of baking powder. We'll mix it thoroughly, nicely. So guys, as the dough is ready, so now we will start making the biscuits. So how we will be making the biscuit, as we don't have the biscuit cutter, so we will be slightly making the biscuit, like making it rectangle in shape, pressing it slightly, forming a rectangle shape throughout. It can be uneven. It's like you see the bakery biscuits with finger like no marks on it, prints on it. So yeah, that's you have to do. With this much of thickness, you will be placing it in here. So basically the plate is already the oven plate is already greased. इसको आपको घी से, oil से, any cooking oil आप use कर सकते हैं. So yeah. So we find what we want and we lose it all again. Your touch on my skin, pull me close, take me in.
आपको इस पे इसका निशान देना है, कांटे का। इसका बस बेस कवर्ड होना चाहिए सॉल्ट के साथ, और ऐसा नहीं आपका सॉल्ट खराब हो जाएगा। सॉल्ट है ये आपका लाइक बार बार आप यूज कर सकते हैं फॉर बेकिंग मोर कुकीज, फॉर लाइक एनीथिंग। आप मूंगफलियाँ तल सकते हो इसमें, कुछ भी। यू कैन यूज इट फॉर सेवरल थिंग्स। अगेन अगेन आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। वंस इट्स डन, हम लोग जब कुकी बना लेंगे तो आई स्टोर इट विद द मी इन अ बॉक्स और इन अ कंटेनर and I'll reuse it for another recipes। तो इसको प्रीहीट करना है एंड हम इसमें यूज करेंगे इडली वाला ये। इसमें हम कुकीज बनाएंगे। आपके पास अगर ये है तो इडली वाला आप ये यूज कर सकते हैं। और इसको ग्रीस करने की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है, बट मैंने बहुत स्लाइटली ग्रीस किया है जस्ट टू स्टे सेफ कि ना कुकीज़ मेरी चिपके ना। एंड जो हमारा कुकर का ढक्कन होगा उसके अंदर की हमें रबड़ निकालनी है, और जो ऊपर की जो सीटी होती है वो हमें निकालनी है। सो गाइज, इसको हम ऐसे ही बंद करेंगे एंड कुकर को हम प्रीहीट करेंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट मेकिंग द कुकी सेम वे। और अगर आपको मन है थोड़ा अंतर का, वेरिएशन का थोड़ा भी मन है, तो यू कैन ऑफ कोर्स मेक गोल गोल वाले। So for this one I'll go with something different। आप लोग को एक और टेक्निक और एक और डिज़ाइन दिखाती हूँ कुकी की, कि आप स्लाइटली सा राउंड सा शेप लो कुकी का, इसमें यूं कांटा लगाओ और फिर यूं कांटा लगा दो। तो ये आपकी डिज़ाइन तैयार होगी एंड फिर आप इसमें प्लेस करते जाओगे। As you can see the cookie is ready and कलर कितना प्यारा आया है और खुशबू पूरे घर में फैल गई है।
बिकॉज जब कुकी बेक होती है, ब्रेड्स बेक होते हैं, तो आपको पता ही है वो बेकरी वाली खुशबू. एंड लुक एट द कलर गाइस. आई विल पिक अप वन एंड आई शो इट टू यू. लुक एट द कलर. कि कोने में थोड़ा सा डार्क एंड फिर बीच में वो हल्का सा ब्राउनिश सा टिंज. कितना सुंदर आया है. एंड अभी थोड़ी सॉफ्ट है बिकॉज जैसे ही आप उतारते हो इसमें से, अवन में से निकालते हो, तो थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं. उतनी ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी ठंडी होंगी. सो इट विल बी लाइक परफेक्ट क्रिस्पी. मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊंगी थोड़ी देर में. वंस इट्स कूल डाउन मैं इनको थोड़ा हवा में रख देती हूँ. एंड ऐसे ही आपको करना है, थोड़ा खोल के रखना है हवा में. उसके बाद डिब्बे में आपको स्टोर करना है, अदरवाइज़ ये सारी सील जाएंगी. तो इसको ठंडा करके फिर ही आपको स्टोर करना है. तो देखिएगा इसकी कुकीज़. Loving it. I can't wait to have a cup of tea and this lovely cookies. Look at the texture. अभी बस कुकर वाली बची हैं cookies and I'll show you to you in a minute. So guys, finally दोनों तरीके के cookies. ये रही हमारी अवन वाली और ये है हमारी कुकर वाली. तो दोनों ही रेडी हैं. दोनों के कलर बहुत अच्छे आए हैं. तो आप को जो भी सूट करे आप वो बना सकते हैं. इसमें बस थोड़ा सा गुलाई आ जाती है बिकॉज ऑफ इडली वाला जो सांचा है उसकी वजह से. बट 16 कुकीज़ करीब बन जाती हैं. आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर दोनों में ही आया है. सो या ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा ये एक्सपीरियंस, कैसी लगी कुकिंग. और मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ. Until then, stay safe, see you and goodbye.